Hi, everybody. So in this short video, we are going to study how the printf and the scanf statements work. So if you watch this video, you'll be able to understand the subsequent chapters, because in all the subsequent chapters and all the subsequent programs, we will definitely have printf and scanf in the programs. Okay, so let's start. Now, apart from printf and scanf, in this video, I'll also teach you briefly about how to run programs on your computer. So if you have a laptop or if you have a computer, then what you can do is you can install a software called Code Blocks. So you can ask me for its installation file. This is the installation file for Code Blocks. I will give you the installation file. All you need to do is just double click on this file, click on next, and it will get installed. Now, once it gets installed, what you need to do is go to the search, okay, type Code Blocks over here, and you will have this app over here. All right. Now, because this will be your first time, what you can do is you can right click on it. And when you right click on it, you will see over here something like pin to taskbar. In my laptop, you see unpin because I have already pinned it to the taskbar. So when you click on pin to taskbar, this Code Blocks will come over here. Look at the bottom. So now whenever you want to access it in future, you can just access it from here. Okay. All right. Now, once you click on this, an interface like this will open up. Okay. Now let's see how to create a new program over here. So to create a new program over here, I'll click on file. I'll click on new. Then I'll click on file again. See file again. Then I'll click on C++ source and I'll click on go. Then over here, I'll make a selection of C. Don't select C++ by mistake. Next. Okay. Now I hope you can see 3 dots over here. So click on the 3 dots. Now over here, you need to give a name to your program. So let's give it a name, something like first. Okay. And you click on save. All right. Also see what path you have selected over here. So for example, over here, we have selected desktop. Okay. After that, you click on finish. So when you click on finish, see, you will see a program called first over here. Look above this I. So what you have done is you have created a file called first.c. Okay. Every file which is capable of storing a C program should have the extension .c. And you can watch this file over here. See this one. This is the one which we have created. And as you can see right now, it has 0 bytes. Okay. Now let's do our first program over here. So the program will start with something like hash include stdio.h. Stdio.h is a header file, standard input output header file. Then void main, then parenthesis, and then braces. And inside the braces, you will write the statements. Now, I have already written some statements over here. I'll cut it from here. To save time, I have already written it over here. So I'll cut it from here and I'll paste it over here. Okay, come on. Now look at line numbers. Look at line number 4, 5, 6, 7, 8, 9. Can you answer in one word what are these lines called? 4 to 9. So these lines are called declarations. I repeat, they're called declarations. A is a variable of data type int, B is float, C is char, D is double, and talking about D is double, and M is long, also called long int. Okay. Now we have never seen a statement like this, statement number 7. So I'll talk a little about statement number 7 right now, and we'll talk about this in great detail in chapter number 9 arrays. Okay. Sorry, chapter number 8 arrays. So over here, the city is a string variable. Now recollect what is a string. So a string is a collection of characters which is given in double quotes. So city is a string variable which can store maximum 20 characters. I repeat, city is a string variable which can store maximum 20 characters.
And right now, city is initialized to Navi Mumbai. City is initialized to Navi space Mumbai. Okay. All right. So once again, A is int, B is float, C is character variable, which means it can store a single character. Then this city is a string variable, D is a double variable, and M is of data type long. Okay. Now let's have a look at this particular printf. Now I want you to pause this video and I want you to read this printf in your mind. So go through this double quotes and go through the remaining part. Come on, pause the video and do that. Okay, so I hope you saw this. Now listen to me very carefully, okay? Now in this printf, whatever you see in double quotes, it is called control string. I repeat, it is called control string. And what you see after the double quotes, that means over here, it is called argument list. I repeat, it is called argument list. Now, what is the argument list? So the argument list basically contains a list of arguments. Now, what are arguments? So arguments are those values which we want to display. So we want to display the value of A, B, C, city, D, M. So these are all the arguments whose values we want to display. Now, over here, you see this thing, a %D, %F, okay? So now see this entire thing, look at this I symbol. This entire thing from here to here, it is called control string. And the control string contains character groups. I repeat, control string contains character groups. So this %D is a character group. %F is a character group. So come on, can you tell me how many character groups do you see here? So you see 6 character groups: %D, %F, %C, %S, %F, %LD. Okay. Now why there are 6 character groups? Because there are 6 arguments over here: A, B, C, city, D, M. Now what will happen is every character group will correspond to an argument. So %D corresponds to A, %F corresponds to B. Come on, you tell me %C corresponds to whom? C, %S, city, %F, D, %LD, M. Okay. I will just do one thing. I'll change the name over here. So this character variable C, let me call it X over here. Okay. And over here also, I'll write X. Okay. So now this %C corresponds to variable X. Okay. All right. Now this %D is called character group. बराबर. अभी जो D है, F है, C है ना, इन सबको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर. What it is called? Format specifier. Why? Because it specifies the format of the data which is being displayed. So F means float, C means char, S means string. Now this %F corresponds to this D. Now tell me, what is the data type of this D? So the data type of D is double. Now we had written %F for float. So why are we writing %F for double? So the answer is you can use you can use %F for float, for double, and even long double. Okay. All right. Now what is this %D? So %D, that D over there stands for integer. I repeat, it stands for integer. So LD obviously stands for long integer. Okay. So once again, D matlab integer, F float, C char, S string, F float or double, LD means long integer. Okay. Now how things will work over here? So now what I will do is I will run the program and I'll show you the output of this printf. Okay. I hope you remember printf is basically an output statement. So printf kya karega? It will display something on the monitor. Now what this printf will do is it will display the values of all these arguments. Okay. Now how it will display? Let's see. So after typing the program over here, what you need to do is you need to click on build and you need to compile the file. So compilation will do what? It will convert the source code to machine code. So I hope you remember, isko bolte hain source code, the high level language.
जब हम इसको कंपाइल करेंगे ना तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू द लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोस, जिसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज और मशीन कोड. ओके, सो लेट मी कंपाइल इट. All right, so I hope you can see over here zero error, zero warning. So if there are no errors and no warnings, now you'll run it. Now how to run it? So click on this triangle. See this triangle. All right, so run. Now when you run this, you will see a black colored screen like this, जिसमें तुमको input output या output दिखाई देगा. अब ये जो screen है ना, इसको बोलते हैं input output screen. I repeat, it is called input output screen. Okay. Now this is, look where my mouse arrow is. This is the output of this printf statement. बाकी ये जो दो स्टेटमेंट है ना, इनको मत देखो, ये प्रोसेस एंड प्रेस, वो अपने आप खाली सिस्टम जनरेटेड है. वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द फर्स्ट लाइन. ओके, ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. अब printf कैसे काम करता है तो ये देखते हैं. तो होगा क्या, जो %d है ना, इसके बदले में ना इसका वैल्यू डिस्प्ले होगा. सो %d करस्पॉन्ड्स टू a whose value is 25. तो देखो 25 इधर आ गया. %f corresponds to b whose value is 89.75. तो देखो वो इधर आ गया. Now pause the video and think, do you see something different over here? Yes, there is. You will see some extra zeros over here. Okay, you don't see the zeros over here, see? So what happens is, if you're using the format specifier f, then after the decimal point, it will always give 6 digits. So that is why you see 6 digits over here. Okay, 6 digits over here. So if there are less than 6 digits, it will give extra zeros. %c corresponds to x. तो x का वैल्यू है hash. तो देखो इधर hash आ गया. %s corresponds to city. Okay, so city is Navi Mumbai. तो देखो इधर Navi Mumbai आ गया. देन फिर से %f corresponds to d. ओके, जब मैं करस्पॉन्ड्स बोलूं तो तुमको ये आर्ग्यूमेंट का नाम लेना है. %f corresponds to d. ऐसा d का वैल्यू देखो ये है, सो यू गेट दिस आउटपुट एंड 3 एक्स्ट्रा जीरोस. फाइनली m %ld corresponds to m का वैल्यू है 98. तो देखो इधर 98 आ गया. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस. नाउ ये जो स्पेस तुमको इधर दिख रहा है ना, ये वाला स्पेस, ओके, दिस वन, this space is because of the space in printf. Okay, now what I will do is, see, I'll remove this space. See, ये %d and %f का जो space है ना, देखो मैंने remove कर दिया. Okay, now whenever you change the program, you should save the program. So on my keyboard I am pressing Ctrl S. Then you should compile the program. So I go to build and I compile the program, and now I'll run the program. So see, I'll click on the triangle again. Now, when I click on the triangle again, come on, pause the video and see what is different now. So you will realize, see, there is no space between 25 and 89 over here. See, why there is no space? Because there is no space over here. So basically, whatever you give over here will be reflected over here also. Okay. Now let's do one more thing over here. Let's say I write something like this over here. Huh? Let's say I write something like this. I write A equal to, okay, and then over here I give /n. Okay, now I'll save it and then I'll click on build. Sorry, first I need to close the earlier window, so I'll close this. Now I'll save it by pressing Ctrl S. I'll click on build. Now I can do this also, build and run. So this will compile and run the program. So see. All right, now something interesting. Please be very, very, very attentive. ठीक है? सबसे पहले try and tell me what is this thing called. This thing %f को क्या बोलते हैं? %f, %d इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं कैरेक्टर ग्रुप. आई रिपीट, कैरेक्टर ग्रुप. अब कैरेक्टर ग्रुप का लॉजिक क्या है ना? कैरेक्टर ग्रुप का लॉजिक ये है कि printf का ये जो डबल कोट्स है ना, बाय द वे printf का ये जो डबल कोट्स है, इसको बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग. एंड ये जो %d है, %f है, इसको बोलते हैं कैरेक्टर ग्रुप. तो printf का लॉजिक क्या है कि एक्सेप्ट कैरेक्टर ग्रुप, आई रिपीट, एक्सेप्ट कैरेक्टर ग्रुप, if you give anything else in these double quotes, if you give anything else in these double quotes,
then it will be displayed as it is. तो ये देखो, ये जो a इक्वल टू है ना, देखो ध्यान से, ये जो a इक्वल टू है ना, ये एज इट इज डिस्प्ले हो गया, ये देखो एज इट इज, a इक्वल टू, ये देखो एज इट इज। परसेंट डी के बदले देखो 25 आया, देन वी हैव गिवन स्लैश एन ना, सो स्लैश एन ना डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि वो एस्केप सीक्वेंस है। स्लैश एन करस्पॉन्ड्स टू द एंटर की ऑफ द कीबोर्ड। ओके, सो स्लैश एन क्या करता है ना, इट विल ब्रिंग द कर्सर ऑन द नेक्स्ट लाइन। तो इस स्लैश एन ने क्या किया ना, वो कर्सर इधर लेके आया इधर, एंड देन देखो फिर से एक स्पेस है इधर, स्पेस, तो क्योंकि इधर एक स्पेस है ना, ये एक स्पेस आया। ऑलराइट, एंड देन द रिमेनिंग आउटपुट इज नोट टू यू। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड प्रॉपरली हाउ द प्रिंटफ स्टेटमेंट वर्क्स। अगर तुमको प्रिंटफ का वर्किंग नहीं समझाना तो इसके आगे का वीडियो मत देखो, इसको फिर एक बार देखो एंड देन ही इसके आगे का वीडियो तुम देखो। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। Now let's understand that how the scanf works. Okay, तो उसके लिए हम दूसरा प्रोग्राम लेते हैं जो मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा है, ये वाला, ठीक है। Now this is a very small program in which we have printf as well as scanf. Okay, and in this program what we'll try to do is we'll try to read a few things from the user. Okay, and then we'll again display these things, ठीक है। So what I want you to do is, I want you to pause the video and I want you to read, I want you to go through this entire program and please do it very seriously. Okay, so come on, pause the video and read the entire program. Okay, so I hope you have read the entire program. So in this program, there are some variables: name, number, balance and type. Now the thing is, ये सब क्या है? So let's understand this. So we assume as if there is a person. This person will obviously have a name. He has a account number. उसके अकाउंट में कुछ बैलेंस रहेगा एंड अकाउंट का कुछ टाइप रहेगा। ओके, सो टाइप का मतलब होता है या तो सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट या डीमैट अकाउंट। वैसे अभी हम क्या करने वाले ना, इन दिस प्रोग्राम वी विल आस्क द यूजर टू एंटर हिज नेम, हिज अकाउंट नंबर, हिज अकाउंट बैलेंस एंड हिज अकाउंट टाइप। Now, obviously, the user will enter these details. So, to store these details, we have created some variables. So, name is a string variable which will store the name of the person. Number is an integer variable which will store his account number. Balance is a float variable which will store the balance amount. Okay. Now, please understand, balance is always a float because it is basically money. Wherever money is involved, it is float. अब जो टाइप है ना, टाइप is going to store savings account, current account, demat account and so on. But क्या है ना, actually क्या है ना, टाइप का डेटा टाइप should be a string. Type should also be a string. But purposely I have taken type to be of data type char. Char का मतलब single character. So type है ना, वो क्या स्टोर करेगा? Look at the screen, look at line number 14. वो स्टोर करेगा s, वो स्टोर करेगा या तो s स्टोर करेगा, और it will store c or it will store d, where s is saving, c is current, d is demat. Okay, so basically these are the four variables. All right, now let's run the program and directly with the help of the input output I'll explain you the program. Okay, so I will compile the program, or what I can do is I can click on this build and run. So build matlab compile and run matlab execute. Come on. Now this time I want you to take a guess. मुझे एक बात बताओ, जब मैं ये प्रोग्राम को रन करूंगा, वो ब्लैक स्क्रीन जो होता है ना, उस पे सबसे पहले तुम्हें क्या दिखाई देगा? Come on, take a guess. You can pause the video and take a guess. All right, so let's see. I'll build and run. Okay, so listen. So now on this black screen, all right, ये देखो, you will see this thing. अब ये कैसे आया? तो very simple. See, the execution of the program starts at this point. Look at this I symbol in line number 4. So the execution of the program starts from here. तो होगा क्या? When the compiler comes across these declarations, it will create these variables. Then it will come across line number 8. Now line number 8 is a printf. अब याद करो हमने क्या पढ़ा था कि printf के डबल कोट्स में जो भी तुम लिखोगे will be displayed as it is. तो ये देखो, ये as it is डिस्प्ले होगा, ये देखो, look here.
Now, because there is a slash n over here, see, because there is a slash n over here, the cursor is blinking on the next slide. Okay. So now, before I proceed further, I want to explain you the meaning of two terms, programmer and user. Now, who is the programmer? A programmer is the person who develops the program, who codes the program. Okay. A user is the person who simply uses the program, जो program को input देता है और output देखता है. The user may not be the creator of the program. Okay. So many a times क्या होता है, programmer and user अलग अलग लोग होते हैं, and many a times they are same. For example, when you are doing practicals, you will be the programmer and you will be the user. But let's say you are using an ATM machine. I repeat, let's take an example where you are using an ATM machine. The ATM machine also works on a program. So when you are using the ATM machine तुमको बोलता है enter the pin. तो तुम पिन एंटर करते हो. अब जब तुम पिन एंटर कर रहे हो, यू आर द प्रोग्रामर और द यूजर. थिंक. सो यू आर द यूजर, नॉट द प्रोग्रामर. ओके. सो आई होप दीज टू टर्म्स आर क्लियर. अब मैं ये प्रोग्रामर यूजर के बारे में क्यों बोल रहा था, अब समझ में आएगा. तो देखो, यर यू आर द प्रोग्रामर. तुमने प्रिंटफ लिख के ना मॉनिटर पे ये डिस्प्ले किया, ये ना द कर्सर इज ब्लिंकिंग. अब देखो, तुमने यूजर को ऐसा बोला एंटर दिस 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 दिस. तो यूजर अब वो सब चीज टाइप करेगा ना. तो यूजर नेम ऑफ द पर्सन टाइप करेगा, जैक. ठीक है. नाउ द यूजर वांट्स टू टाइप द अकाउंट नंबर. तो उसके लिए व्हाट द यूजर हैज टू डू इज ही हैज टू गिव एटलीस्ट वन स्पेस. आई रिपीट द वर्ड एटलीस्ट. सो वन स्पेस एंड द अकाउंट नंबर 123. Okay, then the user has to type the balance. So he'll give at least one space. So 1, 2, 3, 4, at least one space. 500.5. Okay. Uske baad he has to type the account type. So at least one space and S. Okay. Now I'm about to hit the enter key. Now whatever I'm telling you, listen to this very carefully. Otherwise you will never understand the scanf. Okay. So in the next 2 minutes, in the next 5 minutes, I'm going to start the explanation of scanf. But before I start the explanation of scanf, I want you to pause the video and go through this scanf statement once again. Come on, do that. Pause the video and go through this. So I hope you went through the scanf statement. Okay. Now, if you really went through the scanf statement, what you will realize the structure of the scanf statement is almost same as the printf statement. तो देखो, सेम लॉजिक है. कंट्रोल स्ट्रिंग, आर्ग्यूमेंट लिस्ट, सब कुछ सेम है. ठीक है. द ओनली डिफरेंस इज दैट यू विल सी एम्परसेंड एट सम प्लेसेस बिफोर द वेरिएबल नेम्स. तो अभी ये लॉजिक क्या है, तो सुनो. क्या होता है ना, इन स्कैनफ every variable except a string is preceded by an ampersand. I hope you know ये सीरियल को ampersand बोलते हैं. वो जो and सिंबल होता है, and ampersand, वो ये है. So I repeat, in scanf in scanf every variable is preceded by an ampersand except a string. इसका मतलब क्या है, तो देखो ये नेम है ना, स्ट्रिंग है, तो उसके पहले ampersand नहीं है. देखो, बट बाकी सबके पहले ना एम्परसेंड है. ना तो क्वेश्चन इन योर माइंड कुड बी एम्परसेंड क्यों डालने का, तो दैट वी विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 9 पॉइंटर्स. सो व्हेन वी डू चैप्टर नंबर 9 पॉइंटर्स, तब हम वो सीखेंगे. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. अब देखो, इधर कर्सर ब्लिंक हो रहा है, इधर देखो. नाउ वेरी सून आई एम अबाउट टू हिट द एंटर की. जब मैं एंटर की हिट करूंगा ना, तो स्कैनफ विल स्टार्ट वर्किंग. I always tell my students के नाम से ही काम समझो. फॉर एग्जाम्पल printf, तो printf का फुल फॉर्म है प्रिंट फंक्शन. तो प्रिंट का मतलब होता है शोइंग ऑन द स्क्रीन. scanf, तो उसका मतलब है स्कैन फंक्शन. तो स्कैन फंक्शन क्या करता है ना, वो आउटपुट को स्कैन करता है, आउटपुट को रीड करता है. ठीक है. अब मैं इधर एंटर की हिट करूंगा. जब मैं एंटर की हिट करूंगा, ओके, तो scanf शुरू हो जाएगा. scanf क्या करेगा, वो रीड करेगा. ये देखो ऐसा, JACK. Now what do you see after K? A space. Now the moment compiler sees a space, it will temporarily terminate reading. I repeat, it will temporarily terminate reading. And इधर तक जो भी उसने रीड किया है ना, that will be assigned to name.
तो जो जैक है ना, जैक, वो नेम को मिल जाएगा, नेम, ठीक है। उसके बाद अगेन इट विल स्टार्ट रीडिंग 1 2 3। नाउ व्हाट डू यू सी आफ्टर 3? तो 3 के बाद देखो फिर से स्पेस है, अगेन इट विल टेम्परली टर्मिनेट रीडिंग, एंड इधर तक उसने जो रीड किया 1 2 3 वो नंबर को मिल जाएगा। सिमिलरली 500.5 बैलेंस को मिल जाएगा। सिमिलरली ये जो एस है वो टाइप को मिल जाएगा। ओके, नाउ इसके बाद अब प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा। प्रिंटफ क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, प्रिंटफ ये नेम नंबर बैलेंस टाइप का वैल्यूज डिस्प्ले कर रहा है। सो पॉज द वीडियो एंड यू थिंक इन योर माइंड के लाइन नंबर 11 का आउटपुट क्या आएगा। थिंक। यस, मेनी ऑफ यू गेस्ड इट राइट, वो आउटपुट सेम आएगा या ऑलमोस्ट सेम आएगा, ये देखो। ओके, सो ये जो है ना, ये लुक एट अ माउस पॉइंटर, ये इनपुट है जो यूजर ने दिया था, और ये जो दिख रहा है ना, ये आउटपुट है जो हम प्रोग्रामर है बाय द वे, हमने यूजर को दिखाया। तो देखो जैक है, उसके बाद 1 2 3 है, उसके बाद ये है, उसके बाद एस है। नाउ वन सिंपल थिंग, यूजर ने तो 500.5 दिया था, बट इधर ये एक्स्ट्रा जीरोस क्यों आया? क्योंकि ये प्रिंटफ का रूल है, प्रिंटफ का रूल है कि परसेंट एफ के लिए ऑलवेज देयर विल बी 6 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ओके, so I hope you understood this. Now, as I told you, over here we are doing this only briefly, not in great detail. Okay, so there are many things about printf and scanf which you need to learn in detail, and how to learn them in detail that I'll tell you later on. For time being, just understand a few things. मुझे एक बात बताओ, ये k and 1 के बीच में what do you see? So you see a blank space, the space bar key of the keyboard. ये जो ब्लैंक स्पेस जहां जहां दिया है ना, इसके बदले में ना आई कुड हैव गिवन अ टैब आल्सो। ओके, नहीं समझा तो ये देखो, आई विल रन द प्रोग्राम अगेन, सी आई रन द प्रोग्राम अगेन। ओके, तो देखो, नाउ आई रन द प्रोग्राम अगेन, आई गिव जैक। हाँ, नाउ ऑन माय कीबोर्ड आई हिट द टैब की, टैब, देखो टैब की मैंने सिर्फ एक बार टैब की दबाया। ओके, उसके बाद मैंने 1 2 3 दिया ना। आफ्टर 1 2 3 आई कैन गिव द एंटर की ऑल्सो, देखो मैंने एंटर दिया, बट फिर भी देखो कर्सर अभी भी ब्लिंक कर रहा है। ऑल राइट, मैंने दिया 500.5। हाँ, अब मैंने देखो 2 बार टैब दिया, या एक काम करता हूं, इस बार स्पेस देता हूं, मैंने स्पेस दिया, देखो स्पेस, एंड नाउ आई टाइप एस। सो सी here there is a tab, here there is enter key, here there is space. Okay, and now I have given all the inputs, now I'll hit the enter key. Now before I explain, can you take a guess that ये जो प्रिंटफ है ना, ये इसका आउटपुट अभी सेम होगा या अलग होगा? सोचो, इसका आउटपुट सेम होगा या अलग होगा? पॉज द वीडियो एंड सोचो। सो आउटपुट विल बी सेम, ये देखो सेम आउटपुट है, देखो ये, देखो ये। सो इससे हमको क्या कंक्लूजन डिराइव करना चाहिए? द कंक्लूजन इज कि व्हेन यू आर गिविंग इनपुट, व्हेन यू आर गिविंग इनपुट इन सी लैंग्वेज, that input can be separated by a space. Look here, space. It can be separated by a tab, and it can be separated by enter key, जिसको न्यू लाइन कैरेक्टर बोलते हैं। बाय द वे, ये जो स्पेस है, टैब है, ये जो न्यू लाइन है ना, इसको कलेक्टिवली बोलते हैं व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स। आई रिपीट, इसको कलेक्टिवली बोलते हैं व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स। देखो मेरा टाइप करता हूं, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स। So finally, the conclusion is that when you are reading data in C language, that data can be separated by white space characters. And the white space character is either a space or a tab or an enter key. Okay. अब किसी किसी के माइंड में डाउट आया रहेगा कि what if I want to give the full name of the user? समझो यूजर का नाम है, समझो यूजर का नाम है संदीप स्पेस गुप्ता, संदीप स्पेस गुप्ता। अगर मुझे पूरा नाम देना है तो क्या? सो द आंसर इज दैट scanf cannot read strings with blank spaces. scanf cannot read strings with blank spaces. Okay, तो उसके लिए क्या करने का, that we will see in the subsequent lecture. Okay, so I hope you understood till here. If you understood till here, you can now understand the subsequent lecture. Thank you very much.